गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज भूटान पॉलिसी। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी अभी 2 डे स्टेट विजिट पर गए थे भूटान में, और वो इसलिए गए थे क्योंकि 70th बर्थडे सेलिब्रेशंस थे फोर्थ किंग वांगचुक के। तो ये विजिट रीअफर्म कर रही है इंडिया भूटान की स्पेशल पार्टनरशिप। अगर हम देखें तो फोर्थ किंग जो है 1972 में थ्रोन पे आए एट द एज ऑफ 16, और उन्होंने अपनी फादर की पॉलिसी ऑफ क्लोज टाइज विद इंडिया को कंटिन्यू किया। उन्होंने कोऑर्डिनेट किए फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, इंडिया के प्लानिंग फ्रेमवर्क पर मॉडल थे जो, और भूटान की करेंसी को इंडियन रुपी के साथ पैक कर दिया 1:1 के रेशियो पे। भूटान के डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट को उन्होंने बढ़ाया, जबकि इंडिया को उन्होंने उसमें इन्फॉर्म्ड रखा। बॉर्डर टॉक्स विद चाइना भी शुरू किए उन्होंने 1984 में, लेकिन कंसल्टेशन रखी इंडियन लीडरशिप के साथ। उन्होंने भूटान के हाइड्रो पावर पार्टनरशिप इंडिया के साथ जो है वो बढ़ाई आगे। और ये प्रोजेक्ट जो थे वो ग्रांट लोन मॉडल पर बेस्ड थे, जो कि भूटान के एक्सपोर्ट रेवेन्यू का बेडरॉक बने, इंडिया के लिए क्लीन एनर्जी इंपोर्ट का बेडरॉक बने। ऑपरेशन ऑल क्लियर 2003 में इंडियन सपोर्ट के साथ उन्होंने इंसर्जेंट कैंप्स जो उल्फा के या एनडीएफबी या केएलओ के थे वो भूटानी सॉइल से रिमूव किए, और डिफेंस और बॉर्डर कोऑपरेशन बढ़ाया। 2006 में उन्होंने थ्रोन को छोड़ दिया भूटान के डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और उन्होंने ही ओवरसॉ की इंडिया भूटान की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी 2007 में हुई थी। तो अभी जब पीएम मोदी वहां पर गए हैं तो 1020 मेगावाट का पुनत सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है। 4000 करोड़ का कंसेशनल क्रेडिट लाइन दिया गया है न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। रिफर्म किया गया है इंडिया के 10,000 करोड़ की असिस्टेंस अंडर भूटान 12th 5 ईयर प्लान। एक्सपेंशन की जा रही है कोलैबोरेशन की इन फिनटेक, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्पेस टेक्नोलॉजी। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और इनलैंड वाटरवेज को स्ट्रेंथन किया जा रहा है फॉर रीजनल इंटीग्रेशन। फाइनलाइजेशन हो रही है 3 MOUs की इन रीन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। इंडियन पीएम ने ऑफर किया है प्रेयर्स एट दी मोनेस्ट्री, ताशिंग चोंग मोनेस्ट्री। ठीक है। अब भूटान की विजनरी लीडरशिप जो है फोर्थ किंग की लेगेसी में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज फिलॉसफी बन चुकी है, जिसमें डेवलपमेंट को ह्यूमन वेलबींग बियॉन्ड जीडीपी से आइडेंटिफाई किया जाता है। एब्डिकेशन के बाद भी वो एक तरह से स्ट्रेटजिक एडवाइजर हैं भूटानीज मोनार्की और गवर्नमेंट को अभी तक। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिफ्ट ओवर ट्रिब्यूनल्स। टॉपिक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एडजर्नमेंट मांग रही है उस केस में जिसमें कि चैलेंज किया गया है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को। तो ट्रिब्यूनल्स जो है वो जुडिशल या क्वाजी जुडिशल बॉडीज़ होती हैं जो क्रिएट किए जाते हैं हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स, जिनके लिए एक्सपर्टीज़ और फास्टर रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है ट्रिब्यूनल्स के पास उतनी ही इंडिपेंडेंस होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से जितनी जुडिशरी के पास है। ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, कॉम्पोजिशन, टेन्योर ऑफ मेंबर्स, ये सब आ जाता है। कोर्ट ने रेकमेंड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर ट्रिब्यूनल जो है उसको लॉ मिनिस्ट्री के अंडर रखा जाए, ना कि उन मिनिस्ट्रीज के अंडर जिनके अगेंस्ट वो एडजुडिकेट कर रहे हैं। ठीक है। बाद में उन्होंने इवन ये भी प्रपोज कर दिया कि इंडिपेंडेंट नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन होना चाहिए। अब ट्रिब्यूनल्स जो है आपको याद होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बनाए गए हैं, और आर्टिकल 323A और 323B के अंदर दोनों ही में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स भी बना सकते हैं ट्रिब्यूनल्स को। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ट्रिब्यूनल्स जो है वो बाकी के सब्जेक्ट्स पर भी बनाए जा सकते हैं अंडर 7th शेड्यूल। ठीक है। अब ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट जो है उसको चैलेंज किया गया है मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा कि वो अंडरमाइन कर रहा है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को और वायलेट कर रहा है सेपरेशन ऑफ पावर्स को। तो ट्रिब्यूनल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड केसेस जैसे कि इन एरियाज ऑफ टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते हैं। उसकी वजह से जब ये केस चल रहा है तो नेशन वाइड ट्रिब्यूनल्स को इफेक्ट हो रहा है। अब बार एसोसिएशन का कहना है कि जो एक्ट था 2021 वाला, उसने उन प्रोविजंस को री इंट्रोड्यूस कर दिया जो अदरवाइज पहले एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लाई थी गवर्नमेंट, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में स्ट्रक डाउन कर दिया था। जैसे 4 ईयर टर्म फॉर ट्रिब्यूनल मेंबर्स, मिनिमम अपॉइंटमेंट एज 50। ठीक है। और री इनैक्ट किया गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के थ्रू इन प्रोविजंस को। तो पार्लियामेंट एक तरह से जुडिशियल वर्डिक्ट को ओवरराइड करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। ये मद्रास बार एसोसिएशन कह रहा है। तो जो टसल है बिटवीन सेंटर एंड सुप्रीम कोर्ट ओवर कंट्रोल ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ये फाइनेंस एक्ट 2017 से शुरू हुआ, जब गवर्नमेंट ने पावर दी
खुद के पास कि वो ट्रिब्यूनल्स बना सकती हैं। लेकिन 2019 में रॉजर मैथ्यू जजमेंट में इन रूल्स को स्ट्रक डाउन किया गया, कहा कि इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वीक हो सकती है। अब सेंटर ने जब न्यू ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स 2020 में इशू किए तो उसे चैलेंज किया गया है मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल का टेन्योर कर दो 4 साल की बजाय, ताकि इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोटेक्ट रहे। लेकिन 2021 में सेंटर ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें 4 ईयर टेन्योर कहा और 50 ईयर्स ऑफ ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट्स के लिए एज कही, मिनिमम एज। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोविजंस को आर्बिट्ररी कह के स्ट्रक डाउन कर दिया। लेकिन एक महीने बाद ही पार्लियामेंट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 पास करके वो सेम प्रोविजंस जो स्ट्रक डाउन किए गए थे उन्हें री इनैक्ट कर दिया। तो मद्रास बार एसोसिएशन ने आर्ग्यू किया है कि 4 साल का जो टेन्योर है उससे वो जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट प्रेशर के लिए वल्नरेबल रहते हैं। उन्होंने कहा कि मिनिमम एज लिमिट जो 50 ईयर्स की है वो यंगर केपेबल लॉयर्स को एक्सक्लूड कर देती है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये एज लिमिट इंश्योर करती है कि सफिशिएंट एक्सपीरियंस के मेंबर्स ही आए, और जो 4 साल की टर्म है वो इनफ है जॉब सिक्योरिटी के लिए। और जो ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ है सेंटर और सुप्रीम कोर्ट का ओवर ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट्स और सर्विस रूल्स, उसकी वजह से सीरियस डिले हो रही है वैकेंसीज को फिल करने में, जिससे की ट्रिब्यूनल्स की फंक्शनिंग जो है वो हैम्पर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो परसिस्टेंट डिलेज हैं उससे सेवरल ट्रिब्यूनल्स लगभग वर्चुअली डिफंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हम्बोल्ट पेंगुइन। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चिली के साइंटिस्ट ने कहा है कि वर्ल्ड की श्रिंकिंग पॉपुलेशन ऑफ हम्बोल्ट पेंगुइन्स और ज़्यादा रिस्क में है। हम्बोल्ट पेंगुइन्स जो है उनको हम बैंडेड ग्रुप कहते हैं, और ये हम्बोल्ट करंट के पास लोकेटेड होते हैं, और ये एंडेमिक है पैसिफिक कोस्ट ऑफ चिले एंड पेरू में। इनके लार्ज बेयर स्किन पैचेस होते हैं अराउंड देयर आइज, और इनकी हाइट जस्ट 2 फीट से ज़्यादा तक होती है। ब्रीडिंग सीजन जो है इनका वो मार्च अप्रैल का और सितंबर अक्टूबर के पीरियड में होता है, और ये मोनोगैमस होते हैं। ठीक है, कंपटीशन होता है इनका फॉर फूड फ्रॉम कमर्शियल फिशिंग। ठीक है, एज वेल एज हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन, बर्ड फ्लू, इस वजह से सब ये जो है इनका नंबर डिक्लाइन हो रहा है। और अगर हम IUCN में देखें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नियोडीमियम। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया प्लान कर रहा है कि वो नियोडीमियम की प्रोडक्शन को 9 टाइम्स बढ़ा दे। तो नियोडीमियम जो है वो एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। ये लैंथेनाइड मिनरल्स में पाया जाता है, ब्राज़ील, चाइना, US, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया में। ऑक्सीडाइज हो जाता है बहुत जल्दी, इसलिए इसको प्लास्टिक कवरिंग में स्टोर करके रखना पड़ता है, और ये बहुत धीरे धीरे जो है मिनरल एसिड्स के साथ भी रिएक्ट हो जाता है। लेकिन इसका की रोल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज और डिफेंस सिस्टम्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग COP30 ऑफ UNFCCC, जर्मनी और स्पेन ने अनाउंस किया है $100 मिलियन की कमिटमेंट टू द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड का न्यू प्रोग्राम अराइज। तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या है? 2008 में लॉन्च किया गया मल्टीलैटरल क्लाइमेट फंड, जिसमें कि क्लाइमेट एक्शन इनेबल किया जा रहा है इन ओवर 70 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। पर्पज़ क्या है CIF का? फाइनेंस करना कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स फॉर क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, ताकि डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी इसको हेल्प हो सके। अब इसमें 2 फंड्स होते हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड और स्ट्रेटजिक क्लाइमेट फंड। ये अकेला ऐसा क्लाइमेट फंड है जो वर्क करता है एक्सक्लूसिवली विद 6 AAA रेटेड मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। 2024 में ये CIF जो है फर्स्ट मल्टीलैटरल क्लाइमेट फंड बना, जो कि जिसने लिस्ट किए बॉन्ड्स ऑन कैपिटल मार्केट्स। इसका जो सेक्रेटरीट है वो वर्ल्ड बैंक होस्ट करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंसर्न्स रेज किए गए हैं अबाउट दी प्रपोज्ड विंड फार्म नियर ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, धनुषकोडी, तमिलनाडु में। तो ये ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी लोकेटेड है धनुषकोडी, रामानंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, और ये नेसल्ड है विद इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में। ये एक क्रिटिकल स्टॉप ओवर पॉइंट है अलॉन्ग दी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ये डाइवर्स इकोसिस्टम्स फीचर करता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट फीचर करता है। लार्ज वेडिंग, अब ग्रेटर फ्लेमिंगो क्या है? लार्ज वेडिंग बर्ड जो अपनी डिस्टिंक्टिव पिंक फेदर्स और यूनिक फीडिंग हैबिट्स के लिए जाना जाता है। अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया और सदर्न यूरोप में ये पाया जाता है। लीस्ट कंसर्न स्टेटस है इसका। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज PS नरसिम्हा ने कहा है कि बहुत से एनवायरमेंटल लॉ प्रिंसिपल्स जो वेस्टर्न कंट्रीज से हमने इंपोर्ट किए हैं वो जैसे इंटरजनरेशनल इक्विटी, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक है, मतलब ह्यूमंस के को ये सबसे इंपॉर्टेंट पेडेस्टल पर रख के फिर डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है,
और इससे कोई खास एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अब इंटर जनरेशनल इक्विटी क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन करंट जनरेशन की कि वो ये इंश्योर करे कि जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनके पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज हों जैसे कि प्रेजेंट जनरेशन के पास है। तो बेसिकली इक्विटी बिटवीन जनरेशन हम इंश्योर करना चाहते हैं। तो मतलब एक तरह से ड्यूटी है हमारे ऊपर कि हम फ्यूचर जनरेशन्स की जो है का ख्याल रखें। ठीक है, तो ये एक रिकग्नाइज प्रिंसिपल है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ में भी। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is India's Bhutan policy. This topic is important for your international relations. So Prime Minister Modi was on a 2-day visit to Bhutan to mark a momentous occasion of 70th birthday celebrations of fourth king Jigme Sengye Wangchuk, who is the father of current monarch. Okay, so this visit reaffirms the India-Bhutan special partnership, and the fourth king ascended the throne in 1972 at the age of 16, and he continued his father's policy of close ties with India. So he coordinated the first 5-year plans for Bhutan, which were modeled on India's planning framework only. So he pegged Bhutan's currency to the Indian rupee at 1:1 ratio. Great. He expanded Bhutan's diplomatic footprint while keeping India informed. He even initiated border talks with China in consultation with Indian leadership. So he laid the foundation for Bhutan's hydropower partnership with India, and the projects were built on grant loan model, and it became these projects became the bedrock of Bhutan's export revenue and India's clean energy import. So he also spearheaded the Operation All Clear, which eliminated, of course, with India's support, to the insurgent camps of Ulfa, NDFB, KLO from Bhutanese soil, and this way he strengthened defense and border cooperation with India. See, he abdicated the throne in 2006, paving the way for Bhutan's democratic transformation. He also oversaw the India-Bhutan Friendship Treaty. Okay, recently when PM Modi visited there, he inaugurated 1020 megawatt Punat Sangchu 2 hydroelectric project. He also announced 4,000 crore concessional credit line for new energy projects and reaffirmed India's 10,000 crore assistance under Bhutan's 12th 5-year plan. He also talked about expansion of collaboration in fintech, innovation, entrepreneurship, and space technology. He also strengthened border infrastructure and inland waterways for regional integration. He also oversaw the finalization of 3 MOUs in renewable energy, healthcare, and mental health services. Indian PM offered prayers at the monastery, Tashingchong Monastery, to the sacred Piprava relics of Lord Buddha, underscoring shared Buddhist heritage. So the fourth king legacy has this gross national happiness also, which is a globally recognized policy philosophy of redefining development as human well-being beyond GDP. Okay, even post abdication, this fourth Bhutan king is a strategic advisor for both the Bhutanese monarchy and the government. Okay. So the next topic is rift over tribunals. This topic is important for your polity section. So Supreme Court has expressed strong displeasure over the central government's seeking of another adjournment in the case challenging the Tribunal Reforms Act of 2021. So tribunals are judicial or quasi-judicial bodies created to handle specific types of disputes which require expertise or faster resolution. So Supreme Court has emphasized that tribunals must enjoy the same independence from the executive as the judiciary. And the key aspects of the independence include selection process, composition, and tenure of members. The court has also recommended that administrative control over tribunals be placed under the law ministry, not the ministries that they adjudicate against. But later on, it proposed an independent national tribunals commission. Okay. So tribunals were formally established through the 42nd constitutional amendment, which introduced Article 323A and 323B. Article 323A allows Parliament to create administrative tribunals for public service matters. Article 323B allows Parliament and state legislatures to create tribunals on subjects like taxation, land reforms, and labor. In 2010, Supreme Court clarified that tribunals could also be formed on other subjects under the 7th schedule. Okay. So the Tribunals Reform Act of 2021 has been challenged by the Madras Bar Association, um, and,
for undermining judicial independence and violating the separation of powers concept. Tribunals which handle specialized cases in areas like taxation, corporate law, and administration have been affected nationwide by the ongoing case. The Madras Bar Association argued that Act reintroduced provisions like the 4-year term for tribunal members and a minimum appointment age of 50, which were part of an earlier ordinance struck down by Supreme Court in July 2021. By reenacting the same provisions without addressing the legal flaws identified earlier, the petitioners claim Parliament attempted to override a judicial verdict. Okay, so the tussle between Centre and Supreme Court over control of tribunals began with the Finance Act of 2017, which gave the government the power to make rules for tribunals. However, in 2019, the Supreme Court's Roger Matthew judgment struck down these rules, and when the Centre issued tribunal rules in 2020, they were again challenged by the Madras Bar Association. Supreme Court suggested key changes, including a 5-year tenure for tribunal members. In 2021 April, the Centre passed an ordinance setting a 4-year tenure and a minimum age of 50 years for tribunal appointments. And by July 2021, the Supreme Court struck down these provisions as arbitrary and against the principle of separation of powers. A month later, Parliament passed the Tribunal Reforms Act 2021, reenacting the same struck down provisions. Okay. So, Madras Bar Association has argued that the 4-year tenure for tribunal members makes them vulnerable to government pressure, and they also said that the minimum age of limit of 50 years unfairly excludes younger capable lawyers. Okay, even though individuals can become high court judges at a younger age, but union government has defended these provisions, saying that age limit ensures sufficient experience, and the 4-year term with reappointment offers enough job security as well. So, this ongoing standoff between Centre and Supreme Court over tribunal appointments and service rules has caused serious delays in filling vacancies across several key tribunals. And Supreme Court has noted that these persistent delays have made several tribunals virtually defunct. Okay. So the next topic is Humboldt penguin. This topic is important for your environment section. So Chilean scientists have warned of further risks to the world's shrinking population of Humboldt penguins. So Humboldt penguin is commonly known as the banded group. They are so named because their habitat is located near the Humboldt Current. And Humboldt penguins are endemic to the Pacific coast of Chile and Peru. They have large bare skin patches around their eyes. They have height of just over 2 feet. Their breeding season in the wild is either March, April, or September, October period, and they are monogamous. The competition for food from commercial fishing, as well as habitat loss, pollution, bird flu, are worsening the impacts of climate change, and they are contributing the declining numbers of these penguins, and they have a vulnerable IUCN status. So the next topic is neodymium. This topic is important for your science and tech section. So India is planning to increase its neodymium production by 9 times. Neodymium is a chemical element and it belongs to rare earth elements. It is found in minerals which include all lanthanide minerals like monazite and bastanesite. Their deposits are mainly found in Brazil, China, US, India, Sri Lanka, and Australia. They are ductile and malleable, silvery white metal. It oxidizes uh, readily in air, and it must be stored sealed in a plastic covering or kept in vacuum or in an inert atmosphere. It reacts gradually with mineral acids as well, but it plays a key role in electric vehicles, clean energy technologies, and defense systems. So the next topic is climate investment fund. This topic is again important for your environment section. So during COP30 of UNFCCC, Germany and Spain have announced $100 million commitment to the climate investment fund. Okay, so climate investment fund was launched in 2008, and it's a multilateral climate fund which enables climate action in over 70 low and middle income countries. The purpose of this fund is to finance comprehensive measures for climate change mitigation and adaptation in developing and emerging technologies. So it comprises of two funds, Clean Technology Fund and Strategic Climate Fund. It is the only climate fund working exclusively with AAA rated multilateral development banks. It is in 2024, this CIF became the first multilateral climate fund to list bonds on the capital markets, and its secretariat is hosted by the World Bank. So the next topic is Greater Flamingo Sanctuary. This topic is important for our environment section. So concerns have been raised over a proposed wind farm near Greater Flamingo Sanctuary in Dhanushkodi, Tamil Nadu. It is located in Dhanushkodi in Ramananthapuram district of Tamil Nadu. It is nestled within the ecologically sensitive Gulf of Mannar Biosphere Reserve. It is a critical stopover point along the Central Asian Flyway, and it features diverse ecosystems and mangrove forests. Okay,
So, what is greater flamingo? It is a large wading bird known for its distinctive pink feathers and unique feeding habitats. Its range spans from Africa, Western Asia, and Southern Europe, and it is least concern in IUCN status. So the next topic is principle of intergenerational equity. This topic is important for your environment section. Supreme Court Judge P.S. Narasimha has said that many of the environmental law principles imported from Western countries are anthropocentric and they are hardly of any assistance to protect an endangered species. So what is intergenerational equity? It is the moral obligation of current generation to ensure that future generations have the same opportunities and resources available to them as the present generation. And this basically refers to equity between generations, which means that there is a duty of the present generation towards the future generation. So it's also a recognized principle of international environment law. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.